चलो 31. A block of mass 1 kg, okay, is kept on a smooth floor of a truck on one end of a spring of force constant 100, k equal to 100 बोला है, k equal to 100, m equal to 1 is attached to the block and the other end is attached to the body of the truck as shown. Okay, so ये block है, यहाँ पे तुमने spring attach की, fine. At equal to 0 the truck begins to move with constant acceleration, so a equal to 2. The amplitude of the oscillation of block related to the floor of the truck. With respect to truck, यहाँ पे acceleration a वैसा रहेगा, so like m a in that direction, whatever. It's like kx in this direction. Oh yeah. Okay, the amplitude of the oscillation of block related to the floor of the truck is right. So x compression बोल दो. So what do you get? Just our force, which is also just it's like उस direction में नहीं थी अपने. We want it in this direction actually. So okay. I should just say, okay, in this direction, so compression is d square x upon dt square. That's our a in that case. This is just equal to what, like kx upon वो negative आएगा, right? So negative kx upon m and plus a in this direction, right? Well, that's the thing. Okay. Begin with concentration. The amplitude of the oscillation of block related to the floor of the truck is. Hey, that's just figuring out कि ये क्या होगा. Okay, that's easy. That's just easy. So equilibrium position constant, which is x is equal to m upon ma upon k, right? That's our equilibrium position. That is the amplitude, in fact. So just figure it out. Like, yeah, 1 times 2 upon 100. It's like 0.02 meters. So B is the answer. Next question. 32. With respect to truck, yes. Yeah, that is the thing. Next question. That is the amplitude for sure. Next question. Okay, a block of mass m kept in gravity-free space touches the two springs as shown in the figure. What? Okay. Initially, springs are in natural length. Now, a block shifted L upon 2 from the given position in such a way that it compresses a spring and released. Okay. So, ये 2L है. This is L. Okay. Compresses a string and then it's released. The time period of the oscillation of mass will be. Okay. Right. Wait. Okay, time period of the oscillation, right? Okay, cool. ठीक है ना, we just have to figure out. Right, so first of all, it doesn't matter कि तुमने कैसे compress किया, because in the end it's just doing SH and that's what matters. पहले तो ये ऐसा oscillation होने वाला है, फिर बाद में ऐसा. Yeah, okay. So pi upon omega से pi square root of क्या होता है, kx upon m. So k upon m is omega square, like square root of k upon x over omega, square root of m upon k. That is the thing. Okay, square root of m upon k. तो इसमें k है, right? Okay. ये जो चीज़ है, that's time period for the first half. Okay, that's time required, and then pi square root of m upon 4k, that's time required for the second half oscillation, right? Oh yeah, springs are not attached to the block. Oh shit, wait, what? No shit, because yeah, it is good. अपने वही तो किया, इनफैक्ट अपने कुछ अलग थोड़ी ना किया. If these were attached, तो फिर यहाँ पे 5k you get the thing. वो होता, that's not what we did. Okay, this is the thing, of course. Sort of m upon k for this half, and then pi sort of, yeah, it's just what, pi sort of m upon k times 1 plus 1 upon 3 upon 2. So C is the answer. Next question. Next is 33, which is what? A source is moving with constant speed u on a straight what? Emitting a sound, straight line most likely. Emitting a sound of frequency f naught. These are there are three observers A, B, C. A is on track. B is perpendicular. Okay, at a perpendicular distance of D from the track, and C at a perpendicular distance of 2D from the track as shown. The frequency of the observed, okay, the variation of the observed frequency with respect to the position x, right? तो A के लिए क्या, A के लिए तो एक discontinuous चीज होने वाली है for sure, right? For A it has to be like discontinuous. So ये कैसा हो रहा है? This is C, this thing is also 3. ये 2 है, and right, so it seems like 1 जो है वो A के लिए है. So C and D correct दिख रहे हैं मुझे, and what about B and, right? Okay. So हाँ, दोनों का सेम होगा, that is fine. जब ये काफी पास में रहेगा इसका, when it's like very close to this, अगर x काफी छोटा है, right, and this thing is like D, तो फिर how is the frequency going to change or what, right? Yeah, okay, well, just say like this angle is theta or something. Maybe that's not the best way.
you want this guy. में इसका cosine चाहिए, right? You want cosine of this angle or like the sine of this angle. Yeah, right. Cosine of that angle is that. Well, yes, that is the thing. Cosine of that angle is basically just this upon that, it's like sine of this angle. यहाँ पे speed ऐसी है, cosine of that, so it was in this direction, whatever, right? क्या ऐसा रहता है like c minus v observer upon c minus v source, right? Because so when source की frequency speed तुम increase करते हो along c, तुम्हारा right your frequency actually increases. Yes, that is what's happening. Cool. And then v तुम बढ़ाते हो तुम्हारी frequency decrease होती है. That looks correct to me. Okay, this times f naught. तो अपनी frequency इस type से vary हो रही है. Well, जो observers है वो तो move नहीं कर रहे, तो ये तो just this thing basically. आपको तो ये चीज देखनी है 1 upon 1 minus of the v thing upon c, right? Like okay, v along उसके साथ, yeah, okay, so v upon c, but actually v cosine of theta. So v sine of e वाला angle, right? Which is like x upon d से multiply करा हुआ. That's the thing, right? So yeah, that's what. Okay, इसको अगर मैं और approximate to like 1 plus vx upon cd, that looks correct. क्या कर रहा हूँ मैं? vx upon cd, binomial theorem, right? तो x का ओके आगे क्या है, v upon cd. v upon cd is और स्लोप, जिसका d बड़ा है उसका स्लोप छोटा रहेगा. दिस इज स्लोप. इट्स वियर्ड, यहाँ पे दोनों को नेगेटिव कैसे हो गया? समथिंग वेंट रॉन्ग और व्हाट? ओह दैट्स अलोंग दैट गाय. ओके, तो यहाँ पे c के साथ में ही तो है, वही तो है, और क्या है? अच्छा, जब x पॉजिटिव रहेगा इन दैट, ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड. राइट, वेट अ सेकंड. Wait, how can you say like this is? Wait a second. But अपन ने तो x के साथ में किया ना, that's the thing, sure. So x is only positive because otherwise. तो ये पॉजिटिव x क्या है? I don't know. पर स्लो का मैग्नीट्यूड तो अपन चेक कर सकते हैं. So राइट, यहाँ पे पहले क्या फ्रीक्वेंसी बड़ी है, फिर अपन से छोटी हो गई. फ्रीक्वेंसी बड़ी मतलब कि अच्छा, फिर ओके x निगेटिव ये चीज है जो अभी इनिशियल अपने कंडीशन दी है, राइट? सो x में क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा, किस यहाँ पे x में ऐसा होता है. व्हाटएवर, द स्लोप इज लाइक नेगेटिव b अपॉन cd, जो भी है मैग्नीट्यूड वाइज इज दैट. जिसका भी d बड़ा होगा दैट हैज स्मॉलर मैग्नीट्यूड. स्मॉलर मैग्नीट्यूड किसका है? ऑफ थर्ड. सो थर्ड का फिर d बड़ा है, व्हिच मींस राइट इट्स c बेसिकली, c का 3. या सो c इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. Okay, two particles start moving at t equal to 0 in xy plane, so that one of them moves along a line y equal to x with speed v, other moves along line y equal to negative x with the same speed. If the third particle starts moving simultaneously from the origin along the y-axis, such that all the three remain collinear for all values of t. तो ये ऐसा है. Okay, speed of the third particle will be what? So इसकी स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड v है ना? Okay, सेम स्पीड. तो ये v है, ये v है. ये क्या स्पीड होनी चाहिए? इसको अपन लाइक कॉल्स v डैश, राइट? ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इसको x x इसको y में x मान लूं, देन इट्स लाइक दिस थिंग कि ये तो दिस इज लाइक 135 डिग्री पर है ये. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? दिस इज जस्ट राइट. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इट्स जस्ट v टाइम्स ऑफ 1, सो v टाइम्स ऑफ vt बेसिकली, vt टाइम्स 1, 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? vt टाइम्स 0, 1. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? vt का कॉमा नेगेटिव 1 अपॉन स्क्वायर 2, 1 अपॉन स्क्वायर 2, राइट? हो गया. तो अगर ये ओके नॉट vt इज लाइक v डैश t. एक काम करो, जिससे इट्स लाइक लैम्डा टाइम्स v. सो ये क्या बचेगा? पे लैम्डा डाल दो. ओके कूल. सो वी वांट दीस गाइस टू बी व्हाट? कोलिनियर, राइट? तो दिस डिटर्मिनेंट 1, 0, 1, 0, 1, 0 एंड negative lambda upon square root of 2, negative lambda upon square root of 2, 1. This has to be, oh यहाँ पे 1 चाहिए था, sorry. Right, this has to be equal to 0. Okay, very not good. ठीक है, फिर एक काम करो, lambda upon square root बाहर निकालो. What do you get? Like okay, this just becomes this thing. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 and square root of 2 upon lambda. Subtract करो, what you get? Just get
यहाँ पे 0 एक्चुअली यू नो व्हाट, मे बी दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू बी डूइंग, व्हाटएवर करो, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इट जस्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 1 आ जाएगा, यस या, एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट एज वेल, सो दिस इज लाइक 1, यहाँ पे नेगेटिव 1 1 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, oh god, that is awesome. Wait, nahin, you can't just, okay, that's not the way to be doing this. अपने को what we'll have to do is like get rid of one of these guys. So for that just subtract this guy. Okay, that's like ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 कर डालो. That's awesome. This is determinant has to be 0, which means like square root of 2 upon lambda minus 1, that's equal to 1. So that's just equal to 2, मतलब कि क्या? Square root of 2 lambda is equal to 1 upon square root of 2. So just put that over there, right? So it's like 1 upon square root of 2 times b, which is b. Next question. 35. 35 is a solid sphere of radius r and a hollow sphere of inner radius r and outer radius capital R are made of copper, heated to the same temperature, allowed to cool in the same environment. दोनों कॉपर के बने, राइट? ओके, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हॉलो स्फीयर कूल्स फास्टर, सो अपन जब कूल बोल रहे हैं तो क्या हीट आउटपुट बोल रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन? आई डोंट नो. ओके, आई थिंक जब अपन कूल बोल रहे हैं तो अपन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. अपने चाहिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो सॉलिड स्फीयर, ओके, एक राइट, हॉलो स्फीयर कूल्स फास्टर, आई गेस या तो टेम्परेचर जल्दी चेंज होगा, यस. Solid sphere cools faster. Both the spheres attain room temperature at the same time. I don't think that's the way it should be. That's like proportional to this guy, right? Yeah. Wait, what? But oh god, they never attain room temperature. Okay, this is like very weird because Newton's law of cooling is applied. It's like proportional. So temperature difference is proportional to its derivative, of course. But in negative, God, it's like, oh no, first order kinetics. Nahi, they never attain the room temperature basically. The rate of loss of heat of the solid sphere is twice that of the hollow sphere. Twice for what? Q. A minute. Loss of heat. That is the same for both of them. I think cool faster करने की temperature का change होगा फिर in that case, right? Okay, so yes, hollow sphere cools faster. So A is the answer. Next question. 36. If the radius of the air bubble on one side of the cube is r and difference in height of liquid of density rho in nanometer is h, तो density rho है यहाँ पे find करो. Surface tension of the liquid used to make a bubble. अच्छा, ये bubble जो है वो okay, air bubble, and this is you, okay, fine, got it. Surface tension of the liquid used to make the bubble, right? 2T upon r is our pressure difference, right? 2T ना, कितने इसमें फिल्म्स बने होंगे? अंदर एयर है, ये लिक्विड, ओके, इट्स लाइक 4 एक्चुअली, नॉट जस्ट 2, इट्स 4. इसमें 2 फिल्म्स है, दैट्स व्हाई. सो 4T अपॉन आर इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, ऑफ कोर्स, लाइक यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, सो जो अपन प्रेशर चलते जाएगा, ओके, रो जी एच, यू नो द थिंग, टू रो जी एच. सो तो चाहिए व्हाट? दी टेंशन, सरफेस टेंशन, जस्ट आर रो जी एच अपॉन 4, व्हिच इज बी, आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. 37. अब मुझे भी लग रहा है कि मेंस लेवल का हो गया. जो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. एक रिएक्शन, एंडोथर्मिक पता है मुझे, ये क्या होता है? आई थिंक एंडोथर्मिक ही बोल रहे हैं, राइट? आई मीन व्हाट कुड गो रॉन्ग? सो समथिंग दैट रिक्वायर्स हीट, मतलब इसका एक्चुअली में चेंज इन एनर्जी इज लाइक पॉजिटिव, दैट्स व्हाट यू वांट. ओके, and when I say energy, I mean like kinetic energy का change. Or wait, नहीं, wait, heat is required. इसके बाद जो mc squared चीज रहेगी, I mean, okay, understood. So हाँ, तुम्हारा जो delta m है, that should be positive. That will mean कि तुम्हारा, right, kinetic energy के बारे में कुछ खास पता है नहीं, but then whatever. So क्या हो रहा है इसमें? Mass of hydrogen is given. Oh God, ये बहुत लंबा होने वाला है. So we'll just say कि एक कैपिटल M यूनिट अपन क्रिएट करेंगे.
कैपिटल एम फंक्शन विच बेसिकली रिटर्न्स की इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर डालेगा एंड देन मल्टीप्लाई करेगा लेट्स से बाय 10 पावर 4 राइट और फिर रिटर्न करेगा. सो इसका क्या जस्ट हाइड्रोजन के लिए क्या है जस्ट 73. फिर कैपिटल एम ऑफ कितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए है न्यूट्रॉन का मास 1 होता है राइट. 87 ओके. फिर राइट वो तो अपने को ऑलरेडी दिए हुए इसमें सो फिर वी डोंट एक्चुअली हैव टू डू बिकॉज़ हर जगह पे 4 डिजिट्स ही दिए हैं राइट. सो टिल 4 डिजिट्स कूल दैट्स थिंग. ओके तो अपने को चाहिए इसमें कौन सा एंडोथर्मिक का डेल्टा एम पॉजिटिव चाहिए. पहले तो क्या ये दिस इज 1h3 which is where this thing तो 160 फिर प्लस 1h1 160 प्लस 1h1 के लिए तो दिया है 73 then minus 2h1 which is here so like 141 दिया है फिर इसमें and plus so once again 2h was like 2 times of this guy which is like 282 so 233 minus 282 which is actually negative not good. ओके यहाँ पे भी 282 है और ये चीज क्या है 2He3 ओके which is where कहाँ पर है 2He3 this thing right so 160 right okay sorry और क्या है न्यूट्रॉन it's just 87 this thing it's like what wait ये क्या है इसका और इसका सेम क्यों है आखिर 1H3 का और 2H3 का तुम लोगों ने सेम गॉड क्वेश्चन है कुछ भी फॉल्ट है दैट्स द थिंग बिकॉज वेट नहीं नहीं ओके एटॉमिक मास इनका सेम ही है बट एक में आई डोंट नो अजीब है ये जो भी है और ये 2H1 सॉरी 1H2 है व्हिच इज जस्ट ओके दैट एक्चुअली वर्क्स आउट नो बिग डील. और ये क्या है 160 प्लस न्यूट्रॉन के लिए जस्ट 87 दैट्स द थिंग जस्ट 247 माइनस नहीं काम नहीं करेगा फॉर दिस गाय वेट इसमें नॉट व्हाट आई वांट चलो ठीक है जो भी है डी का करते हैं राइट हीलियम हीलियम बिकम्स बेरिलियम आई डोंट नो maybe this is actually doable I don't know so फिर इसका करते हैं is this doable I have no idea चलो देखते हैं 1H2 which is I still don't get it कि ये जो पहले वाला था उसमें क्या हो गया 1H3 का ये दिया है and then that's like the same as that one and then 1H1 का हाँ somehow it becomes more I have no idea कैसे होता है okay और इसका क्या होगा so 2H4 so 2He4 which is this like 26 bond delta M to be positive right ये नाइट्रोजन क्या यहाँ पर है नाइट्रोजन is this thing 87 minus 1H2 which is 140 अच्छा वो तो ऑलरेडी निगेटिव हो गया वो निगेटिव हो गया you don't want this ओके और क्या है फिर लास्ट में बचा है जस्ट डी सो 2He4 which is इसका डबल which is like 50 ओके सो माइनस में क्या आएगा 56 52 राइट या और क्या है 4 like 53 राइट सो जस्ट बच गया ये मतलब राइट दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 38 The adjacent diagram describes the intensity of X-ray photons versus their wavelength coming out of a tube when potential difference across the tube is V. Atomic number of the target element is Z. If V is changed to V1 and Z to Z1, choose the correct incorrect statements. अच्छा राइट ओके तो V को तुमने चेंज किया एंड तुमने Z को चेंज किया तो यू हैव टू राइट एट एज अ फंक्शन ऑफ V एंड Z राइट ओके कूल पहले तुमने को ये क्या क्या निकालना है okay lambda m so we're stopping wait okay minimum wavelength और ये क्या है से x-ray wait what intensity of x-ray photons versus their wavelength coming out of a tube okay fine so like electrons hit कर रहे हैं versus photons okay cool I got it so just E times V that's the energy इसमें थी that's equal to what right okay that is equal to so either this complete energy can be utilized so right and then that's actually like this mechanics is कुछ भी आने वाला है okay fine just equal to what h times hc upon like
wavelength minimum, right? So wavelength minimum is proportional to what is 1 upon v, nothing else. Yeah, that's the thing. Z का कुछ दिया है क्या? No. So ये जो wavelength minimum है, that actually is independent of Z. So if v1 is equal to v, lambda dash के बारे में क्या दिया है? Say second, it's like this is k alpha, I think it's k beta, something like that. I don't know. Okay, this is actually dependent on Z, isn't it? Right, it was like electron transitions, so it has to be. फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्ट में तुम कितनी एनर्जी से जा रहे हो, बिकॉज इन द एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज व्हाट मैटर. सो इस ये जो चीज है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वी. लैम्डा डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी बेसिकली. ओके, फॉर v1 इक्वल टू, वो तो सेम कर डाला व्हाटएवर. z1 is bigger than lambda m will remain same, yes, because v तुमने चेंज नहीं किया. एंड lambda dash will decrease. तुमने z1 को इंक्रीज कर दिया, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है दैट कॉजेस मोर एनर्जी नाउ. So yes, lambda dash will decrease in fact. So C तो करेक्ट लग रहा है मुझे. और क्या है? For one B Z1 B Z. It should remain same. Okay. अब मुझे ये choose the incorrect. Okay, A correct है, C correct है in that case because yeah. Lambda dash will remain same, yes, and then V1 bigger than B. Lambda M decreases. Yes, understood. फिर क्या है? V1 bigger than B. Lambda M should decrease and Z1 को तुमने same रखा. That's not what should happen. Lambda M decreases. Lambda dash remains same. So B is incorrect. और D क्या है? Lambda M and okay. What next question? 39. Okay, the magnetic moment of the given loop carrying current 2A is given by this loop. Magnetic moment carrying current 2A. The area vector or something. Oh god. I don't particularly like this. इसका क्या होने वाला है? ये just integration of like okay. It is just I times the area vector. That is what it is. Okay. अब एरिया वेक्टर जो इसका पूरा रहेगा, हाउ डू यू मेक दैट हैपन? इट्स लाइक वो पॉजिटिव जा रहा है, इट्स नेगेटिव. ऊपर के दोनों साइड्स डिलीट हो गए अपने आप, नहीं? या तो इसका कर्ल इन डायरेक्शन दिस डायरेक्शन आई गेस. या दैट हैज टू थिंक ऑफ यू साइड ऊपर है. यस, इट कैंसल्स आउट बेसिकली. सो ऊपर नीचे के दोनों साइड्स कैंसिल हो गए. और क्या? इट जस्ट बेसिकली जो साइड का बचा हुआ है, दैट्स ऑल इट इज. So that's in this direction. It's completely in negative I hat, right? Yeah, it's in negative I hat. और कितना है? तो ये एरिया कितना है? Just 20 centimeter times 0.2. 0.2 times 0.1, which is 0.02. Therefore 2 is like, oh, you want centimeter square? That's interesting. So क्या ये 20 times 10, which is like 200 times of 2 is like 400. So 400 in negative I hat. ये दोनों सेम क्यों दिए इसमें? हाँ, ये दोनों तो सेम हो गए. ये दोनों भी सेम दिए. So A and C. I don't know, इन्हें सेम क्यों दिया? 40. A string of negligible, एक और सी लिखना चाहिए, I think. String of negligible mass. Natural and L has Young's modulus y. The string hangs from the roof with masses m1, m2 as shown in the figure. If the mass m2 is removed gently, then mass m1 is just able to bounce back up to the point O. m2 को रिलीज किया, m1 just bounces back. और ये क्या चीज है? ये it's a string of negligible mass, natural then L. Oh, so it's like a, oh, okay, got it. Right, the ratio m2 upon m1, string will not obstruct the motion of mass m1 and system is initially in equilibrium. Initial equilibrium है and string will not obstruct motion of m1. Okay, so I got it. The thing. Okay. Right, energy equation, right? Energy is the thing. Okay. The mass m1 is just able to bounce back up to point O. O कहाँ पर है? ओ बाप रे, यहाँ पर एकदम. That is very unexpected. Initial length हमारी क्या है? Natural length L है. I know मैं ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैं करने वाला हूँ, but like whatever. So energy stored in this string कितनी होगी? It's just like half kx, but then what's k for this thing? Basically like Young's modulus times the strain आता है, which is like x upon L. That is our okay, this times of area, of course. This is actually our force, right? So F equal to kx, इसमें k क्या होगा? Just a y upon L. So half of this thing and then you want x square, right? Yeah.
सो एल से अब 2l पे आ गया, लाइक एक्स इज जस्ट एल बेसिकली। तो जो हमारी एनर्जी स्टोर थी जस्ट दिस थिंग, so like AYL upon 2, that was the energy stored. Okay, yeah, that's got to be the thing, of course. So एनर्जी स्टोर अपने को मिल गई, और ऑल्सो बिकॉज हमारे पास में ग्रेविटेशन एनर्जी थी। सो ओके कूल। अच्छा, फिर अब तुमने इसको रिलीज कर दिया, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट M2। इनिशियली एनर्जी क्या थी ये चीज, और सपोज ये अपनी रिटर्न हाइट है तो फिर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। रिलीज किया, ये एकदम ऊपर चला गया, जस्ट 2m, so 2l एंड देन गॉट M1 G, राइट। ये एनर्जी उसने लाइक गेन कर दी है, एंड तुम्हारे स्प्रिंग की एनर्जी कंप्लीटली गई, पूरी चली गई, राइट। पर या दैट्स द थिंग, दैट्स इज आवर इक्वेशन एक्चुअली। सब में चाहिए व्हाट वी वांट। Oh yeah, okay, and also M2 का रेफरेंस दिया, right? Okay, so like M1 plus M2, अच्छा फिर L काट दो, what you get like A Young's modulus upon 4 is equal to M1G. Also M1 plus M2G is equal to A Young's modulus, कहाँ मर गया ये, like कितना इंक्रीमेंट है L, L upon L, और यहाँ मर गया 1, right? This is the thing. So what does it actually mean? That this thing is like 1/4 of this guy. ये 1/4 that this will be like 3/4. So what is M1 upon M? No, M2 upon M1. It's like 3. So A is answer next question. 41. 41 is, but यार ये क्या हो रहा है? Okay, 41. 41 is in the adjacent figure thus which S is close at equal to 0. QA, QB, QC charges on capacitor ABC. Steady state. Okay. Choose the correct statement. तो steady state में है ना? Okay, 1 microfarad, 2 microfarad. ने ये सेल दिया है यहाँ पे, वेल steady state है तो फिर इससे करंट तो इसमें कोई करंट नहीं रहने वाला, इसमें कोई करंट नहीं आने वाला, इसमें करंट नहीं आने वाला, जस्ट बेसिकली कितना लाइक ओके यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता इन दैट केस। तो यहाँ से वो 10 ओहम तो हटा ही दो, इनफैक्ट ये जस्ट यहाँ पे ये 10 ओहम है। ओके कूल। तो अपना जो करंट फ्लो होने वाला है just 2 amperes, so 2 amperes in this direction, right? Okay, तो फिर 2 times that is 20 potential difference है around, so A में potential difference and also like capacitances and charges देखने अपने को। so A में potential difference कितना है अपना 20, B में potential difference कितना, so yeah because like that's the thing। B की बात करते हैं, so ये पोटेंशियल सेम है, इस पोटेंशियल क्या है, इस पोटेंशियल तो सेम है। ओके, तो ये तो 20 वापस इसमें डिफरेंस आ गया, सब में 20 आ रहा है ना, सी में नहीं, सी में अलग आ रहा है सी। ओके, ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल इक्वल है, एंड ये पोटेंशियल तो है ही पोटेंशियल, इट्स एक्चुअली 14 है प्लीज, 40 कैपेसिटेंस कितने हैं, 1 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। सो 20 माइक्रोकूलम, फिर 60 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम, ये चार्जेस आ रहे हैं इस पे। ओके, सो व्हाट यू वांट, चाहिए इनइक्वालिटी, सो ऑफ कोर्स लाइक QA, so basically A is less than B is less than C, of course, right? So A less than B less than C, which is A. Next question, 42. Okay, a diverging beam of light from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. Okay, the angles of incidence are equal. If the thickness of the glass slab is D and its refractive index is N, then the divergence angle made by the emergent beam is. Okay, wait, what? Divergence angle made by the emergent beam. It's the same, right? Because वो still like जो ये वाले जो दो रेज रहेगी वो सेम एंगल से भी जाने वाली है, सो उनके बीच का एंगल तो भी सेम है, जस्ट वो कहां से आ रही थी वो चीज चेंज हुई है, राइट? या राइट, so it's still alpha, so B is the answer, right? And which is of the emergent beam, it has to be alpha, so B is the answer. Next question, 43. Okay, a cubical block is sliding freely on a rough inclined surface of inclination theta. Coefficient of friction between the block and floor is mu, and edge of the block is L. Perpendicular distance of the normal reaction from the center of block. Okay, first of all, center of block के बारे में बात, right? So just जो block है, take out this guy. So perpendicular distance of normal reaction from center of block, whatever.
इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें mg sin theta in this direction, so we'll just actually skip m everywhere is like g sin theta in this direction and then g cosine theta in that direction because inclination theta, so yes. Okay, and then और क्या है, it is sliding freely, so just mu times the normal reaction, normal reaction is like g cosine theta, so just mu g cosine theta in this direction, यहाँ पे normal reaction है ऊपर g cosine theta, we don't know ये कहाँ पे act कर रहा है but then torque तो same है हर जगह पे, so हाँ. Okay, perpendicular distance of the normal reaction from the, okay cool, so with respect to center of mass हमारा जो omega is like 0, so इसकी जो side length है वो कुछ दी है, right, s length is l, so yeah, l upon 2, like l upon 2 mu g cosine theta in this direction. Let's just say कि यहाँ से x है distance, so well actually no, it should be x in this direction because that is supposed to be this. Right, so यहाँ पे x चाहिए रहेगा, right. This is equal to what, x times यहाँ पे जो normal force लगने वाला है, which is like just g cosine theta of course. Hey, why even worry about this g cosine theta stuff because we already, yeah ये तो वैसे भी मरने वाला था ना, who cares, तो फिर mg चाहिए, but जो भी है, so right, that is the thing, like that's the topic basically. Right, so x is like what, just mu l upon 2, yeah. So D's answer, come on, this was easy. Perpendicular distance of normal reaction from the center of block, yes, mu l upon 2, D's answer. Next question, 44. ये तो एक्चुअली में अच्छा है, मुझे याद रखना चाहिए मोस्ट. Okay, a thread is bound on a solid cylinder of uniform density. As the thread is pulled horizontally, the cylinder rolls on horizontal plane. Okay, wound, the thread is pulled horizontally, the cylinder rolls. Okay, fine. The minimum coefficient of friction required for pure rolling. Understood. ठीक है ना, कर लेते हैं. So friction force अपने को निकालना पड़ेगा, right? So yeah, like force is from this. So यहाँ से कुछ तो भी तुम force से खींच रहे हो. Minimum coefficient of friction required for pure rolling. पर तुम सिर्फ इनिशियली की बात कर रहे हो कि like finally as well that we just want well acceleration, right? So we don't really care about anything else. That's really good. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ that ऐसा and then you got friction force acting over here. वो अपन देख लेंगे कि इसमें यहाँ पे एक्ट करनी क्या, राइट, हो गया. अभी के लिए अपन सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके. और ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर यू आर सीइंग और यहाँ से खींच रहे हो ऑफ कोर्स, ओके कूल. चलो फिर लिखो इसके इक्वेशंस. तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस इज f times of 2r upon about this guys like mr squared upon 2 plus mr squared like 3 upon 2 mr squared, right, upon 2 चाहिए इसमें. So this is equal to ये अपना torque in this direction, yes, sorry ये क्या है, angular acceleration, torque upon inertia, yes, about this point, which is same thing as about center of mass. So हाँ, this can be like so it has f plus f times r upon half mr squared. तो ये हमारा है just 3 over there, और क्या ये r मर जाएगा just this, इसलिए this thing like 2f is equal to, okay, इसका मतलब हुआ कि that f is equal to negative 3f or like the friction force is just negative f upon 3. So it's in this direction and it's actually just negative f upon 3, right? So, yeah. But wait, minimum coefficient friction required for pure rolling. अच्छा तुम्हें okay, so इसलिए तुम लोगों ने वेट डिस्कस दिया था बिकॉज तुमने ऑप्शन डाला इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास ऑफ सिलेंडर. बेसिकली ये होगा ना कि नेगेटिव एफ अपॉन 3 और लाइक व्हाट एफ अपॉन 3, f upon 3 is bigger than or equal to or less than or equal to mu mg because normal force which is वही है ना, like mu mg. So yeah, okay, mass of cylinder doesn't actually, okay, no, increases with increase in speed of cylinder, no, it depends on the friction force, right? So it depends on the force f. Increases with increase in tension, yes. So ये जो tension है ना, just ये जो f is the tension, so f is equal to small f is equal to t upon 3 in this direction actually. So yes, increases with increase in tension, increases with increase in tension, gravity, no. So C is the answer. Next question. (45) wait, medium question. Shit. Coefficient of friction, not okay.
coefficient of friction, not d friction. Okay, so like d upon 3 mg. Right, so it increases with, so अपने को चाहिए क्या है? Okay, increases with mass of cylinder, no. Decreases with increase in mass of cylinder. Increases with increase in speed of cylinder, फर्क नहीं पड़ता speed क्या है. Increases with increase in tension, yes. Increases with increase in acceleration gravity, no. Okay, so still C is correct. Next question, 45. Okay, a plane beam of light of cross section S, intensity I, incident on plane mirror at an angle incidence theta. The reflectivity of the mirror is this thing, and normal force of the reaction is acha. So right, understood. So like eta times intensity bahar gayi hogi, right? So yeah, जो bahar gayi beam hai, like fine. I guess it can be done. First of all, what's the momentum of incident beam, right? देखो वो निकालना पड़ेगा. ठीक है ना? Just do this thing. So S times I is the energy. But actually not just the energy you want. ये energy, okay, this is energy per second, right? Okay. I guess, yeah. This is the energy per second, which is like also just h times the frequency जो भी रही होगी, or like hc upon lambda if you want. But then wait a second, like isn't h upon lambda just momentum? So the momentum times c, ये energy है एक photon की, so momentum is like p just, yeah, and then you just have dn upon dt. So n is like number of photons that have hit this thing, right? तो वो बीम के लिए ऐसा हो रहा है, which means like okay, p dn upon dt is like dp upon dt जहाँ पे okay, this is this small p if you want, small p is momentum of photon, capital P is momentum of beam जो भी है, so this is equal to dp upon dt times c. So like yeah, understood. तो वो जो बीम है it's like having dp upon dt is equal to एस आई अपॉन सी, मतलब कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना मोमेंटम फ्लो हो रहा है, इट्स लाइक दिस थिंग, राइट? ओके, तो जो तुम्हारी बीम है इन टाइम डी टी एक्चुअली में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो डी पी मोमेंटम इस पे पड़ा इस चीज पे, एंड वापस भी निकला, राइट? सो हर फोटोन के लिए जो मोमेंटम स्मॉल पी है, कितना तो मोमेंटम एक्चुअली इम्पार्ट कर रहे हो इस चीज पे, कहाँ पे गया वो, इस, राइट, क्या ये ईटा इज द दैट थिंग, सो 1 प्लस ईटा स्मॉल पी अगर नॉर्मल होता, बट एक्चुअली में क्या है, एट एन एंगल, आप मर गया ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा. ओके, सो ये नॉर्मल वेक्टर है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लाइक थीटा फॉर आवर बीम, so cosine theta, right? That's the normal one, of course. This times of cosine theta, that actually makes sense, right? I guess, yeah. Yeah, that's the thing. So oh wait, okay, not just that, because अगर ये जस्ट वो बीम रिफ्लेक्ट हो गई तो प्रॉपरली देन जस्ट बी लाइक ये चीज, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, फर्स्ट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइक वापस इमिट कर रहा है, एंड इमिटिंग इन दिस डायरेक्शन और समथिंग. तो एक्चुअली में यहाँ पे गॉड नो नो नो, यहाँ पे जो आया है हैविंग मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, एंड देन यहाँ पे जो ईटा पी है इन दिस डायरेक्शन, शिट, देयर इज आल्सो a change in momentum in this direction actually, right? तो वो जो momentum इसमें impart किया, it's like p minus theta p in like okay sine theta direction, right? So yeah, this is in I hat plus p times of 1 minus eta in sine theta direction. Okay, okay, sine theta j hat direction. Okay, cool. This is the thing, right? So that's the force because of this guys. Okay, it's like dp upon dt. मतलब कि इसमें क्या होगा, like force is okay, got it. Surface area intensity upon speed of light. Just have this thing 1 plus eta cosine theta, comma 1 minus eta sine theta. ये अपने coordinates है इस चीज के, right? Yeah, कौन से नहीं कि वेक्टर के डायरेक्शन, फाइन. अभी भी ढूंढना है क्या ऐसे, नॉर्मल फोर्स ऑन दी नॉर्मल फोर्स. ओके, दैट्स आल्सो द टेंजेंशियल फोर्स, मतलब वो अपने को भूलना है, सो जस्ट दिस थिंग बेसिकली. और ये जो c है, इट्स लाइक कोसाइन थीटा, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस c. ओके, सो लाइक एस आई 1 प्लस म्यू और ईटा
cosine theta अपॉन c नॉट 2c. नहीं cosine स्क्वायर नहीं यार. A is the answer. Next question. बस इतना ही क्वेश्चन थे. So I'll see you guys in the next video. Bye.